Okay, so what we are doing today is just going to this contest page, taking this out, and just which one 13 days. 13 days, seriously. Sorry, what do we need to do? We need to do virtual contest. Start virtual contest. Okay, so this is a way which we are why? I don't know why. But yeah, it's a virtual contest. Why it's happening? What's happening? Not a contest. This is a virtual contest. Why are you seeing answers? Okay, so this is for you guys. So let's just do this. We'll just go this way, and let's just do reset code because we have this kind of stuff. Yeah. So reset. Hope you are watching this solution now. Let me read the question for you. You are given a two indexed array nums1 and nums2. Okay, so these two arrays you have been given consisting of non-negative integers. So these two array will contain non-negative integers. So negative numbers cannot be there. We'll see. And there exists another array called nums3. Okay, so these two array and nums3 is something like which contains bitwise XOR of all pairing between nums1 and nums2. And when I say all the pairing, it means every number in nums1 is paired with every numbers in nums2. Yeah, that's what it is. And no need to do vice versa because it's doing itself. Like for example, when 213 is there and you are pairing it with 10 to 50, so you will pair this 2 with all this like 10, 2 and 5 and 5 and 0, right? So four pairs from 2, similarly 4 pairs from 1, similarly 4 pairs from 3 as well. So it would become 4 into 3, like 12 numbers would be there in nums3. You can see these are the 12 number, I guess, like 3 3 3 3, I think. Yeah, so in this way, like only I said, like you don't need to pair this 10 with 2 and with 1 and with 3 because it's getting already, like it's just obvious, like in the 2's turn it's getting paired with 2, in the turn of 1 it is getting paired with 1, and so on, like 3. So what do we need to do? Let's see. So now you know the pairing. Now you know that you have been given two integer array containing non-negative elements nums1 and nums2, and you know what is nums3. Okay? This is the pairing of nums1 and nums2. Like this is some mashup between nums and nums2. It will form nums3. Now you know how nums3 is forming. Now what you need to do in this question is exactly like return the bitwise XOR of all the integers in nums3. So now you got this nums3 containing n into m elements. If you say like there are n elements of n, so yeah, you know, like the number in this is n, the number in this is m, then nums3 will contain n into m number of n number elements. The n number of elements would be this, so n into m. So what we need to do, we need to return all the XOR of all the elements in this nums3. So the way to do this is very simple way actually. First, let's say I'm creating vector int n3 बोल रहा हूँ, ठीक है, nums3 को for auto in nums1 and we'll pair with for auto I in. Actually you can't do I, you have to at least change the variable name. Nums2, you will simply say n3 dot push back. So in this way you will get all the elements in this, and for order I in n3 and x equal to 0, right? X equal to I return x. That's what you can do, and you can use all the example test case and you will run the code. It will give you correct answer, but that's not you can do in for the larger test case. 10 is per 5 is the length of nums1 and nums2. As you can see, it's giving correct answer. 13,0 is the right answer, but you know 10 is per 5 is nums1 and nums2. So let's just write that as well. Int n is equal to nums1 dot size, and similarly it is equal to nums2 dot size. Okay, so this is 10 is per 5
this stuff with this stuff, it would become 10 raised power 10, which cannot be done, you can say, 1 second. So time limit will exceed something like that. No. Okay, so what the stuff I did is just the basic stuff. Like, you can do this in any question. Then what is the meaning of XOR here? What is the meaning of bitwise operator? And when we see bitwise operator means something is special there. So I can tell you 3 cases. Okay, let me just draw 3 cases for you. So case number 1 and case number 2. Like, maybe you can call it method, like method to solve the question. First method is what I sorted, which I just told you. First, do like normal question. Okay, normal array question, like normal question, normal array question, like whatever. And second stuff is see in terms of bits. Actually, this should be the third. This is the most advanced version which you will find in question. What I did. See in terms of bits, right? And the third one is the most, not most, but it's somewhat more common, and it's like, I'm saying, I think like this is most common. Like, see in terms of bit, it's something, but this one is easy. Like, this one is just use the properties of bitwise operators. So this is something like that. So sometimes it works, right? Many times it works. Operators, right? So this question is based on this, right? First of all, I did this like in front of you. Then during contest, I thought about this one, seeing in terms of bits, but it will not help you eventually, or it can. For example, if you take first example, this is 213 10 5 7. 2 is this, 0 is 1 is this, 3 is this, right? And then we have something like 10 is this, I think, yeah, and 0 is this, 2 is this, and 0 0 1 like 5 is this, and 0 0 is this, right? Now what you need to do, you need to pair these all elements with these all elements. What element will be formed, those 8 elements will be formed, but you cannot find those 8 elements by just something like by seeing in terms of bits over here. Like, I don't think so you can do, but the better way is to just use the property of XOR. So let's say this is something like x1 x2 x3. Okay, this is x1, this is x2, this is x3, and this is similarly y1 y2 y3. Okay, let's say this is y1, let's say this is y2, and let's say this is y3, and let's say this is y4. So what you need to do, if you carefully see, you need to do x1 XOR with y1, okay? x1 getting XOR with y2, and x3 getting XOR with y3, and let's say so on, okay? So on and so forth. At last you will see x3, actually it's y4 also, so x1 getting this with y4, right? And now this one will get something copy over here. Like, we are doing this now, but x1 will change to x3, right? Because there are 3 elements. So this is 3. Okay, this is 3 again. Green is okay. Can you tell me how many elements are there? 12 elements are there, right? The thing is that now you need to find the XOR of these elements. So we can just use property. If I do just XOR of all the elements here, all the elements means just x1 with this, like this, and then x2 So if I do XOR of these 3, can you these 4, can you tell me just what I get? x1 XOR with y1, XOR with again x1, XOR with y2, x3, again XOR with y3, and x1
again XOR with y3. I don't know why I'm writing x1 again. So if you carefully combine all the x1, it's looking like x1 getting XOR with x1, getting XOR with x1, and getting XOR with x1. That's nothing but 0, you know. And it's getting with y1, that's getting with y2, then getting with y3, then getting with y4, right? So the good stuff about this is like you can separate this, like this is like property of XOR operation that is, I think, associative, you can say associative, because associative property means A operates with B, and let's say B and C operates with C. Like order doesn't matter actually, is equal to if pehle nahi. It's like this property, like it's very much distributed. Like you can say A XOR with B is equal to B XOR with A. You can say A XOR with B XOR with C XOR with D. The order doesn't matter. A को तुम पहले D के साथ XOR कर दो, then D को तुम फिर B के साथ XOR कर दो, then D को तुम C के साथ XOR कर दो. Order doesn't matter. So this is the property which we are using. So we'll just do all the XOR stuff. So it will become 0 in this case. It will mitigate. But if it was the number of x1 would be odd, then x1 would be 1 extra 1. So these, like you know that when even number of x1 will mitigate, it will become 0, and then finally it will become x1. Now what is how this number of x1 is getting there? How this number of y1, okay, you will see like y1 is 1 over here, but it's not. Like you have to copy this actually to see that stuff. And in that case, like when x2 is changing, okay, this or coming with x2. I don't know how to write at multiple places at a time. Okay, I'm wasting so much time on this because just to be sure about the concept, just to let you be sure about the concept. Otherwise, this question is very simple. The code is very simple. Now I can write the main code of it. This is a brute force way which you should not do. Like it's not different. Like the other way is just completely different. It's not coming out from brute force way. So in that case, you can say. So in like I can copy this stuff actually. Let's say this is n, right? And then you'll do you need to more x and y, x equal to 0 and y equal to 0, and for auto I n y, x XOR with equal to I, right? And similarly with in the case of nums2 it will XOR with I, right? No problem. But y will XOR with I numbers. Okay, x and y are stored, and then you just need to return something XOR with something. It's very simple, just need to see what is this something and something. If you directly write this x XOR with y, then you are not doing it right, because just I told you, like it's not actually dependent like that. Like yeah, where you'll see all the numbers are here distinct, but still I am cancelling out all the number. Like in this case, x4 was getting actually cancelled. x1, x2, x3, x4 were getting cancelled. This is the hypothetical case where I take in mind x1 is repeating 4 times. Otherwise, if you see this, x1 is just repeating how many times? x1 is repeating 4 times. This is the hypothetical case when x1 is repeating 5 times. This is not this case given to us. Okay? In this case, x1 is repeating 4 times. So that's why what will be the answer? 0 will be the answer. Why 0 will be the answer? Because number of rep is E1. Okay? Number of rep is equal to E1. Now, what is number of rep? Can you tell me? This is coming out from
number of rep is equal to n2 or m, or you can say size of nums2. So that's what you need to do. If size of nums2 m is even, then x1 का लाइक x1 क्या लाइक सारे ही जो हमने x निकाला है वो भी 0 की तरह काउंट होगा, ठीक है. लाइक सारे x1 मिटिगेट हो जाएंगे, all x1 will mitigate, all x2 will mitigate, and similarly all x3 will mitigate. देन बचेगा क्या, y1 y2 y3. वो डिपेंड करेगा कि अब जैसे x1 x2 x3 डिपेंड करा तुम्हारा नंबर ऑफ y, मतलब सॉरी नंबर nums2 में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट. सो उसके साइज पे सिमिलरली y1 y2 अब इट कैन बी 0 लाइक इस हिसाब से. फिर और y1 y2 y3 तुम्हारा डिपेंड करेगा कि nums1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है. बट अभी बात करें तो यहाँ पे जैसे ये 0 0 0 हो गया था बिकॉज दिस इज इवन. सो अभी मैं लिख देता हूँ x1 हमेशा x1 नहीं होगा, यू हैव टू चेक nums2 का साइज, ठीक है, नॉट nums1 का साइज. बच्चे ये गलती करते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग. इफ nums2 का साइज इवन है देन 0 आएगा. इफ nums1 का साइज इवन है देन यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट. अदरवाइज भाई आएगा, ठीक है. इफ nums like I'm saying if this was not even, if x1 is equal to कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार रिपीट हो रहा था, मतलब नंबर ऑफ रेप कितना है, 3 और नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ रेप साइज के बराबर है, यानी कि m भी हमारा 3 है, ठीक है. जब m हमारा 3 है यानी कि y एंड nums2 का साइज हमारा ऑड है. तो यहाँ पे जब ये 3 बार रिपीट हो रहा होता है x1, तो ये नहीं होता, ये क्या होता, ये होता x1 XOR with x1 XOR with x1, और ये सब हो रहा होता सिमिलरली x2 के साथ, x3 के साथ एंड x या के साथ. सो x1 और x1 मिटिगेट हो जाएंगे, बचेगा केवल x1 और सिमिलरली x2 बचेगा और x3 बचेगा. तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, x1 क्या होगा हमारा x1 होगा लिटरली, एंड x2 हमारा x2 होगा, x3 हमारा y3 होगा, और उनका जो मतलब हाँ उनका XOR x1 वही हो जाएगा. फिर हम इसका XOR कर लेंगे. दैट्स बी द आंसर. इट्स इनफ ऑफ टॉकिंग. Let's just know all this stuff. That's all this for explain. This is a good part. 3 methods to solve some question like this. Yes, you will remember. Yeah, I can't believe that is so simple. And no error. He doesn't even know what I know. That is not. How much time I took? I took 17 minutes to explain how this is. That's not at all right. It's submitted. Chalo. Now other questions are not much difficult. This was also not difficult. I would say this was the prettiest or the easiest question of the contest. So this is something like little more harder than this. Question number 2 is little more harder than the first. You are given a string of n videos, each represented by distinct 1 to n number, right? Okay, so what you have been given, you have to find longest uploaded prefix. So longest uploaded prefix, like the thing which you have uploaded, उसका prefix हमारा longest होना चाहिए. Question में क्या बोला, you are given a string, ठीक है, एक string दे रखी है n videos की. So you have been given a string of n videos, right? And each is represented by a distinct letter 1 to n. ठीक है? One will represent the first stream, and similarly so on, and n is about the last stream. So now that you need to upload to a server, so you need to upload these streams into a server, but order will not be. We'll see like what will be the order. You need to implement the data structure that calculates the length of the longest uploaded prefix. ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जो कैलकुलेट करेगा तुम्हारा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स, लाइक जो तुमने अपलोड कर रखा है उसका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स. दैट विल सी लाइक दैट.
एंड एट वेरियस अपलोडेड वेरियस पॉइंट इन द अपलोड प्रोसेस, ठीक है। एक बार निकालना, बार बार निकालना, कभी भी वो बोलेगा, जैसे वो बोलेगा तुरंत निकालना है कि लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स क्या है। सो वी कंसिडर, अब पहली बात आती है कि लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स क्या है, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो जैसे हमने जाना कि ये जो है एन वीडियोस हमारी रिप्रेजेंट हो रही है नंबर से, 1 to n नंबर से, ठीक है। तो वी कंसिडर आई नंबर टू बी अपलोडेड प्रीफिक्स, ठीक है। आई टू बी अपलोडेड प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स मेरा आई हो सकता है अगर 1 to i की सारी प्रेजेंट हो, रेंज 1 to n की रेंज में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंट क्या मतलब वो अपलोडेड होनी चाहिए सर्वर पे, ठीक है। और सर्वर पे प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि वो आई से पहले अपलोड हो चुकी है एज मच। सो द लेंथ, द लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। कुछ समझ आया? एक बार सही से बता देता हूँ, लाइक छोड़ो, तुमने समझ लिया कि कुछ वीडियोज़ हम सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं और एक समय अपलोड करते जाना है, और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे होंगे जब एक क्वेरी आए हमारे पास आएगी कि बताओ लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स क्या है। वो कभी भी आ सकती है, ऐसे नहीं एक बार आएगी, वो 1000 बार आ सकती है, वो कितनी भी बार आ सकती है, वो कभी भी आ सकती है। जैसी वो क्वेरी हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें तुरंत देखना मैं क्या क्या अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और अगर सरल भाषा में बोलूँ, सीधी भाषा में बोलूँ, तो शायद कुछ बच्चे गेस कर पाए हो, और वरना मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेके हमें चेक करना है कि क्या बना रखा है, ठीक है बना रखा है, क्या 2 आ रखा है, क्या 3 आ रखा है, हमें 1 से लेके आगे बढ़ते रहना। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, मान लो 30 तक सारे नंबर आ रखे हैं, 1 से लेके से 35 तक सारे नंबर आ रखे हैं, 1 2 3 4 से लेके 35 तक सारे नंबर आ रहे हैं, बट 36 नहीं आ रखा। फिर 37 आ रखा है, 37 से लेके 38, 39, 40, 41, 42, इससे 50 तक नंबर आ रखे हैं, बस बीच में एक 36 में से गया। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? और कोई पूछे तुमसे लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स, तो तुम बोलोगे आंसर 35 है, क्योंकि 1 से लेके 35 तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। यार आई थिंक आई एम मेकिंग इट मोर कन्फ्यूजिंग, बट एक बार फिर से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने कुछ तुमने वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो, किसी ने बोला लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स क्या है, वो कंटिन्यूस सेट होना चाहिए तुम्हारे पास 1 से लेके उस नंबर तक का, तो तुम वो नंबर तुम्हारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स। सो यू कैन से कि मेरा 5 है आंसर, अगर 1 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। हो सकता है 1 से लेके 5 तक प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है, बट द थिंग इज 6 प्रेजेंट नहीं है, तभी आंसर 5 पे जाके रुका है। अगर 6 प्रेजेंट होता तो आंसर 5 होता, आंसर 6 हो जाता, क्योंकि 1 से लेके 6 तक प्रेजेंट है मेरे, तो आंसर 6 है। 1 से लेके तुम्हें वो नंबर देखना है जहाँ तक मेरी सारी वीडियो अभी तक आ रखी है, ठीक है। अभी मैं 1 से क्यों बोल रहा हूँ, ये तो तब की बात है मैंने सरल भाषा में समझा, ये तुम्हें खुद से डिड्यूस करना पड़ेगा कि ये 1 से क्यों, लिखा भी है यार क्वेश्चन में। अभी कंसिडर आई इज अपलोडेड प्रीफिक्स इफ ऑल वीडियोज इन रेंज फ्रॉम 1 to i इज प्रेजेंट इन दैट इंक्लूसिव। सो अपलोडेड होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो तुम अपलोड करते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एलपीयू प्रीफिक्स तुमने बनाया अपलोड वाला, 4 साइज बना दिया तुमने, 3 को अपलोड करा, फिर तुमने लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए बोला। अब भाई वो जब लॉन्गेस्ट फाइंड करने के लिए जाएगा वो क्या देखेगा, क्या 1 प्रेजेंट है, मतलब 1 से लेके कहाँ तक प्रेजेंट है, वही 1 ही प्रेजेंट नहीं है, तो 1 से लेके कहाँ तक की तो बात ही नहीं आती। तुमने एक 3 डाल रखा है, वो सही बात है, तो क्या तुम बोलोगे मैंने एक वीडियो डाल रखी है तो प्रीफिक्स 1 है? नहीं, प्रीफिक्स 1 नहीं है, क्योंकि प्रीफिक्स की शुरुआत तुम्हारी 1 से होनी चाहिए, तो 1 ही नहीं है ना, तो तब तक कोई आंसर ही नहीं बनेगा। मान लो मैं ऐसा कर देता, पहले 5 डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ, फिर 1 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 5 डाला ना, मैंने आंसर 0 था, मेरा 4 डाला, मैं मान लो सबको डालने के बाद मैं कॉल कर रहा हूँ। सो एक बार दिखाई देता हूँ मैं बोल के, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक बार इसको हटा ही देता हूँ पूरा। सो या मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा सीन ऐसा है, ठीक है, तुम्हारा सीन ऐसा है कि तुमने पहले साइज डिफाइन कर दिया 5 नंबर में इसमें डालूंगा, ठीक है। फिर तुमने अपलोड के लिए बोला, तुमने कहा भाई अपलोड कर दो 5 को, ठीक है। फिर तुमने मांगा लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स बताओ मेरे को, LUP, ठीक है, लॉन्गेस्ट अपलोडेड प्रीफिक्स। फिर वो कुछ आंसर देगा, कैन यू टेल मी व्हाट वो आंसर देगा, यू कैन इजीली टेल, वो आंसर 0 देगा। क्यों? क्योंकि वो 1 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, 1 ही नहीं है तो आंसर बात खत्म, आंसर 0, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ मैं डालूंगा अपलोड कर दो भाई मेरे 5 को, सॉरी 4 कर दिया ना, सो अपलोड कर दो 4 को। मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं उल्टा डालूंगा ना, बहुत स्पेशल केस बनेगा कि 5 4 3 2 1 पे आंसर 0 आएगा, ठीक है, सॉरी 2 तक आंसर 0 आएगा। जैसे मैं 1 डालूंगा तो उसे लेके 1 से लेके 5 तक धड़ाधड़ सारा मिल जाएगा, तो वो सीधा बोल देगा आंसर 5, ठीक है। सो अपलोड जैसे मैंने 4 का अपलोड करा, फिर मैंने LUP पूछा तो वो दे देगा हमको 0, ठीक है। फिर मैंने अपलोड करा 3 को भी अपलोड कर दिया, तब भी आंसर से हम लोग को 0 देगा। अब मान लो मैं अब जाके 1 को अपलोड करूँगा ना, मैं तुम्हारा अपना ऑर्डर हैम्पर कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम समझ जाएंगे। सो ऑन कर देता हूँ, सो ऑन करके ये 2 को डाल देगा, पर जैसे ही अपलोड 1 को करेगा ना,
तो भाई कुछ खास चीज़ आएगी। 1 आ गया आप यहाँ पे, ठीक है। अब किसी ने LUP पूछा तो LUP को क्या देखा भाई, कौन कौन से एलिमेंट, क्या 1 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, क्या 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 5। ये बोले ना आंसर हो गया तुम्हारा 5। इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई 1 ही नहीं था। 2 3 4 5 है, पर ये मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को तो 1 से देखना है क्या 1 प्रेजेंट है। वो बोलेगा नहीं प्रेजेंट है, तो ये एम्प्टी रह जाएगा मेरा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आंसर 0 आ रहा था, एम्प्टी इक्वल टू 0। बट अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 1 जब जोड़ दिया तो ये एम्प्टी नहीं है। मैं 1 से काउंट करना स्टार्ट करूँगा तो ये 1 से काउंट करेगा 5 तक, ठीक है। बट मान लो अब तुम्हारा इसके बाद सीधा 3 के बाद तुमने 1 जोड़ दिया, और फिर तुम पूछो कि अब 3 के बाद 1 जुड़ गया, तो देखो आंसर 1 आएगा, क्योंकि तुमने 1 जोड़ दिया। अब तुम्हारा एक ऐसा पड़ा हुआ है, LUP कोई पूछेगा तो तुम बता दोगे भाई 1। पर अगर ये 3 की जगह तुमने यहाँ पे 2 जोड़ा होता पहले, ठीक है, यहाँ पे तो आंसर 0 ही होता, पर यहाँ पे ये 1 देखता कि 1 भी आ रखा है, 2 भी आ रखा है, तो आंसर कर दो 2। 3 नहीं आ रखा क्योंकि यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा है, 4 5 में होता नहीं है। अगर इस 5 की जगह पहले 3 आ रखा होता तो बहुत सही सीन बैठ जाता, 1 2 3 4 से सारे मिल जाते। यहाँ के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता किस ऑर्डर में एलिमेंट आ रहे हैं, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, तुम देखते कि तुम किस नज़रिए से देख रहे हो। जैसे ही तुम्हें 1 मिलेगा ना, मतलब जैसे ही तुम्हें 1 मिला तो एक्चुअली तुम्हारी लिस्ट एक्टिवेट हुई है कि 1 पहला नंबर तो मिला, एटलीस्ट तुम 1 रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि क्या 2 आ रखा है इससे पहले, इसके बाद आ रखा है, तो आगे से मिल जाएगा। तो जब भी कोई नंबर पूछे तो तुम्हें, जब भी कोई पूछे LUP निकालो तो तुम बोलोगे 1 है, अगर है तो आंसर 1 हुआ। एक बार अब फिर तुम आंसर को बढ़ाना स्टार्ट करोगे, क्या 1 है, ठीक है, क्या 2 है, क्या 3 है, 4 है, 4 है, 5 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, कहाँ तक एलिमेंट्स तुम्हारे पास लगातार है 1 से लेके। सो दैट वॉज एक्चुअली अब तो मैं समझा रहा हूँ कि ये कैलकुलेट करना सही आंसर दे रहा है, बट ये क्यों आंसर सही दे रहा है उसका रीज़न यहाँ पे है, 1 to n सारे नंबर इंक्लूसिव होने चाहिए। ओके, सो दिस इज इनफ डिस्कशन अबाउट द just the problem, like just the question. Let's see how I'm going to do this. तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा ट्रैक रखूँगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, राइट, अपलोड कर रहा हूँ, उसका ट्रैक मुझे रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में पहले 3 आता है ना, ठीक है, एंड देन इसके बाद 1 भेजा था, आई थिंक, फिर 2 भेजा था, ठीक है। सबसे पहले इसने 3 भेजा, 1 भेजा, फिर 2 कहीं जाके भेजा, ठीक है, एज यू कैन सी 1 फिर 2 भेजा। तो जब ये 3 ने भेजा तो मैं ट्रैक कैसे रखूँ, जैसे किया है तो मेरा LP एरे हो गया 3। जब इसने 1 भेजा तो मेरा LP एरे क्या हो गया, 1 और 3 मतलब अलग अलग पड़े हुए हैं, है ना। मतलब LP एरे मान लो तुम बहुत बड़े साइज़ का है, ठीक है, पहले इनिशलाइज़ कर दिया मैंने n के साइज़ से, मेरे को पता है 3 है, 4 है, 4 तो मैंने 4 साइज़ से इनिशलाइज़ कर दिया कि भाई लो 1 2 3 4, सॉरी ये गलत हो गया, उसको ना ऐसे कर देते, ठीक है, ऐसे कर देते, वो 4, ठीक है, मुझको ये पता चल गया, ठीक है। तो जैसे ही 3 आया मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया 3, जैसे ही फिर 1 आया मैंने उठा के रख दिया 1, जैसे अब अभी आंसर क्या है, अभी आंसर 1 है, ठीक है। जब यहाँ पे 3 आया था तब आंसर 0 था, क्योंकि पहला ये नंबर प्रेजेंट है, यहाँ पहला प्रेजेंट है, एटलीस्ट आंसर 1 है। जैसे तुम 2 डालोगे 1 और 3 का ब्रिज भी कनेक्ट हो गया, आंसर 3 हो गया, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 3। तो पहली चीज़ तुम्हें ये एरे मेंटेन करना है, कौन सा एरे, ये वाला, जिसमें तुम ऐसे खाली एरे स्टोर करोगे, जैसे जैसे एलिमेंट आता जाएगा उसको डालते जाओगे, और एक नंबर का ट्रैक रखोगे, एक मैक्स का ट्रैक रखेंगे हम, 1 से शुरू या फिर 0 से शुरू होना बनता है इसका, ठीक है। जैसे कोई भी एलिमेंट आएगा, जैसे 3 आया तो भी 0 ही रहा, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसा मान लेते हैं, 3 आया तो भी 0 रहा, ठीक है। जब 1 आया तो मैक्स को हमें कर देना है 1। मैक्स को चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। मैक्स को हम ऐसे चेंज करेंगे कि हम पूछेंगे कि मैक्स की वैल्यू क्या है, मैक्स की वैल्यू 0 है, हम पूछेंगे क्या तुम्हारे पास 0 आया। जब जैसे अपलोड करने की बात आएगी ना तो वो कुछ बोलेगा कुछ अपलोड करना, वो बोलेगा 3 अपलोड करना, मतलब हम पूछ रहे हैं जो तो अपलोड करना चाह रहे हो वो होना क्या चाहिए, इज्जत से तो वो 1 होना चाहिए, क्या वो 1 है, ये 3 बोलेगा 1 नहीं है, तो हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, फिर वो बोलेगा 1 है, हाँ 1 है, तो मैं बोलूँगा मैक्स को छेड़ो, मैक्स को बढ़ा दो अगर 1 है, ठीक है। 2 के लिए चेक मारो, क्या 2 इंसर्टेड है, 2 इंसर्टेड होता तो वो कुछ कर देता है, वो बोलेगा 2 इंसर्टेड नहीं है, तो जैसे ही बोला 2 इंसर्टेड नहीं है तो ब्रेक कर दो, कोई देखने की जरूरत नहीं, आगे देखना, ठीक है। फिर उसने बोला कि 2 को इंसर्ट करो, अब जब 2 को इंसर्ट करेंगे तो हम ये पूछेंगे कि यहाँ पर
मैक्स की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। तो मैक्स तो प्रेजेंट है, अब मैंने 2 को इंसर्ट करा तो मैक्स ऑफ 2 भी प्रेजेंट ही है ना। ये 2 को मैं इंसर्ट डालना है, एक्चुअली डालना ऐसे हो रहा है कि पहले ये सारा 0 0 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई एलिमेंट मिल रहा है आप उसको 1 बना देते हो, जैसे आपको 3 मिलता है तो आप इसको 1 बना देते हो, फिर आप इसको 1 बना दो, आपने इसको 1 बना दिया, ठीक है। तो ये 1 1 1 ऐसे बन गया एक्चुअली, राइट। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रैक रखने के लिए। जैसे मैंने बोला एक LP एरे ले रहे हैं हम जिसको देखते रहेंगे, एक मैक्स देख रहे हैं जिसको देखते रहेंगे, ठीक है। प्लस LP ये मेथड काम करता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम LP ऑफ UP माइनस UP को ही करेंगे हम, सॉरी UP या वीडियो को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VD से कर देता हूँ, ठीक है। इसको प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। एंड वाइल माई मैक्स इज LP ऑफ मैक्स है, तो करते जाओ, क्या करते जाओ, मैक्स को बढ़ाते जाओ, ये बढ़ाते जाओ, ठीक है। रिटर्न मैक्स मैक्स करो एक्चुअली देखो वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा अलग है, लाइक जो तुम्हारा ये 1th वीडियो है इसको 1 बोलेगा, तुम बोलेगे LP के 1 को बढ़ा दो, ठीक है। पर अगर तुम यहाँ पे 1 से शुरू करते हो तो ये पंगा है कि ये 1 को बढ़ाएगा, राइट। तो 2 को बढ़ाएगा, 3 को बढ़ाएगा, तो जैसे 1 को बढ़ाया तो इसने आंसर दिया, इसने इससे आंसर पूछा, तो आंसर मैक्स के लिए 2 कर चुका है, ठीक है। 1 को बढ़ाने के बाद ये 2 कर चुका है, मैक्स प्लस प्लस हो रहा है ना, भले ही 2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट 1 प्रेजेंट है उससे इसने 2 कर दिया। मैं 0 से स्टार्ट करूँ ना, तो LP ऑफ 0 प्रेजेंट है, बोलेगा हाँ, फिर ये 1 कर देगा, बट एक्चुअली 0 चेकिंग नहीं हो रही, तो इसलिए VD माइनस 1 की बात करें, यार ये 0 और 1 इंडेक्सिंग के लिए है, इसके प्लस 1 माइनस 1 की यहाँ कर देगा, ठीक है। सो VD माइनस 1 एंड यहाँ पे कोई इसे करता है मैक्स इज लेस देन 1 एंड आई एक्चुअली 1 प्लस 1 कर सकते हैं। ये देखना मेन सेट काम कर रहा है नहीं लगा, नहीं कर रहा एक्चुअली। तो मुझे लग रहा थी कि भाई एरे यूज़ करना है बहुत ट्रेडिशनल इंसान है, तो ठीक है, अच्छी बात है, यूज़ करना बहुत ही बढ़िया बात है इससे, बट देख लो, मतलब इसका लॉजिक भी था थोड़ा सा, बट इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, लाइक लॉजिक इज I should plug it in Java. I see that. One thing is this, other thing is this. Okay, on this, I just see this. We got connected, so yeah, that's what we need to do. Yeah, and
you know why it is zero? Feels so. And now it's getting correct answer. Max minus 1, we need to do that. That's why we are doing this. It's working on this. Actually, one test case is provided. Yeah, class and that. Minus 1 दे रहा है. ऐसे काफ़ी पंगा मैंने कर दिया है यहाँ पे. Can we pronounce? I think so. Like, I think I messed up with the concept. That's the whole point of this. I messed up with some of the concept. Let me just again do that. So this max is good, this LP is good, LP initializing with this stuff is good, I guess. Yeah. So what is bad then? Can you tell me what is bad? VD minus 1 is good. Yeah, I guess. Actually, if you are doing this in just one way, I don't think it's tough. No, that's the point. No, you can't actually insert this to VD. Just go on and say I'm just inserting VD because VD will be 3, so you will not be able to fit in 3. Okay, let's just see what we have to do. First of all, let's make this thing plus 1. So, because if there are 4 numbers, sizes 4, we need to actually keep track of 4 numbers. Let's make this max equal to 1 because it will be 1 if 1 is present. ठीक है. And VD को VD की रहने देते हैं. Max आएगा तो we will insert that and max को plus कर देंगे हम. This should be 2, this should be 2, max हो जाएगा plus 2. हमेशा 1 से स्टार्टिंग होगी. क्या 1 प्रेजेंट है? वो बोलेगा नहीं प्रेजेंट है, तो आंसर क्या max minus 1 ही दे देगा हर बार minus 1 देगा अपन. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही 1 आएगा तो मैं बोलूँगा कि 1 प्रेजेंट है. max वाली 2 हो, सो 2 इज लेस देन n ऑब्वियसली. हाँ, डिपेंडिंग ऑन हाँ होना चाहिए. एंड देन उसके बाद क्या 2 प्रेजेंट है तो max वाली 3 हो जाएगी, बट 2 प्रेजेंट नहीं है तो max वाली 2 ही रहेगी. लॉन्गेस्ट पूछा 2 minus 1 दे दिया, अंदर है 0 and 1. Now it's looking right. Actually यहाँ पर n ही आ सकता है, राइट? यू नो ये 89 और 90 वाला प्रॉब्लम है. आई नो दैट आई हैव स्टक विद दैट. दिस इज द थिंग कि मैक्स तुम्हारा n के बराबर, बिकॉज या VD तुम्हारा n भी हो सकता है, मैक्स भी तुम्हारा n हो सकता है. दैट्स राइट, एक्सेप्ट इट टुक अ रियल लॉन्ग टाइम. तो
let's do the first one. Remove letter to equalize the frequency. It was actually pretty simple, pretty 5,900 accepted in this. So is this a less number? Total summation. इसमें बहुत सारे submissions हैं. 5,953 those got accepted in this one. Total accepted. Yes. User accepted. मतलब हाँ 4,000 लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करा के ली दिस क्वेश्चन. तो 4,000 तो जिसकी 4,800 ये तो सभी ने सॉल्व कर दिया. यूजर एक्सेप्टेड टोटल सबमिशन तुम्हारे कर लिया. टोटल यूजर ट्रायल दिखाना चाहिए इसे. वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. और ये अभी आपकी रैंक बताता रहेगा. 1 पता है भाई ये इसमें वर्चुअल में अलग काम करते हैं, वहाँ पे अलग काम करते हैं. फर्स्ट भी कर लेते हैं. सो इट्स नॉट दैट टफ. इसमें you are given a zero index string word call word. ठीक है, you have been given a word, you have been given a string, let's say, and consisting of lowercase English character. Okay, so you need to select any one index and remove that from the string, remove that from the word. एक index उठाओ, उसको remove कर दो, and so that the frequency of every letter should be equal. तो अब जो बाकी वाले एलिमेंट्स बचे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. That's the only point. Return true if it's possible to remove one letter for the frequency if they're equal, and false otherwise. तो इसके तिगड़मबाजी लगाने के 1000 तरीके हो सकते हैं. मैंने बूट करा है, मतलब जैसा इसने बोला मैंने वो कर दिया. इसने बोला कोई भी एक हटाओ, मैंने कोई भी एक हटा दिया. तो बची एक स्ट्रिंग मैंने अपने पास रख ली. मैंने देख लिया क्या इन स्ट्रिंग में सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं. अगर हाँ तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर फॉल्स नहीं है तो अगला हटाने का ट्राई करो. देखो रिटर्न ट्रू इफ इट्स पॉसिबल टू रिमूव वन लेटर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ. सो जैसे ABCC है, ठीक है, मैंने बोला ए को हटा के देखो. BCC क्या सारे लेटर की फ्रीक्वेंसी सेम है? बोलेगा नहीं. तो मैंने कहा छोड़ो, ए को मत हटाओ, B को हटा के देखो. ACC सही है, नहीं है. फिर मैंने कहा C को हटा के देखो, एक C को हटा के देखो. तो ABC सही है, हाँ सही है. तो आंसर आ गया, रिटर्न ट्रू कर दिया. आगे मैं गया नहीं अगले C पे, क्योंकि जैसे ही मेरे को एक ट्रू मिल गया मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया. मान लो उल्टा स्टार्ट करता, पहले नंबर पे मेरे को C मिल जाता, कि C को हटाया, ABC बचा, सही है. एंड जैसे AZZ है, किसी को भी हटा के देखो, पहले वाले A को हटा के देखो तो AZZ नहीं हो रहा. फिर अगले में भी सेम. फिर Z को हटाओगे तो AAZ नहीं हो रहा, अगले में भी सेम. तो मैंने वही करा. मैंने शो और जस्ट रीसेट कोड. और बच्चे कह रहे हैं कि पाइथन में नहीं हो रहा, इधर TLE दे रहा है, उसमें TLE दे रहा है. TLE क्यों दे रहा है ये? सो इसका तो नहीं कर रहा. ऑटो नहीं लगा, मैंने इंट लगाया. डिलीट करना है वर्ड. ऑटो से डिलीट मैंने ट्राई करा, स्टार्टिंग में होता नहीं है. मैं और बात अच्छी तुम्हें कोड रीडेबिलिटी करनी है तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है. और एंड लिखने से पहले वर्ड डॉट साइज सही है. दोनों ही चीज़ें सही है. ये तुम्हारा लॉजिक पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए. तो क्या करना है, एक वर्ड हटाना है. तो वर्ड डॉट इरेज वर्ड डॉट ड्रैगन इरेज हो गया वर्ड, ठीक है. तुम्हें चेक क्या करना है, और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. उसके तरीका क्या है, मैंने तो ये फॉलो करा. ऑटो आई इन वर्ड एन ऑफ आई प्लस प्लस एंड और ऑटो आई इन लेट्स से यहाँ पे मैंने x बना दिया. एन ऑफ W ऑफ 0. अभी जो वर्ड बचा काटने बीतने के बाद, एक नंबर हटाने के बाद, इसमें किसी की भी एक की मैंने फ्रीक्वेंसी उठा ली, फर्स्ट की उठा ली, ठीक है. मैंने बोला इफ आई डॉट सेकेंड अगर इसके इक्वल नहीं है, सारे इक्वल होने चाहिए ना, एक भी नॉट इक्वल मिल गया तो F को कर दो तुम 0
कॉपी मैंने बना ली ताकि एक बार ऑपरेशन करूँ, फिर उसके बाद वो रिटेन कर लूँ अपनी पुरानी स्ट्रिंग बाय यूजिंग दैट कॉपी। ऑपरेशन क्या करा मैंने, ऑपरेशन ये करा, इरेज करा, मैंने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करी, मैंने फ्रीक्वेंसी चेक करी, ठीक है। डब्लू नहीं, कैन बी चोर वर्ड सॉरी, वर्ड इज इक्वल टू एस, ओके। ज़ीरो एल हटाओ भाई, ज़ीरो। द बेसिक लॉजिक अगेन मैं बता रहा हूँ कि तुमने पहले वर्ड लिया, तुमने एक एक कैरेक्टर को हटा के देखा, देन तुमने उस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग तुमने मैप बनाया, देन तुमने चेक कर लिया सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो रिटर्न ट्रू कर दो, एंड नहीं है तो अगले नंबर पर बढ़ जाओ, ट्राई करो एक्सेप्टेड। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक बार बैक टू कॉन्टेस्ट जाके देख लेते हैं फाइनली रैंक। I would like to do fourth question as well. You want me to do? Do you want me to do fourth question as well? Should I create separate video? Bar. So this is not good because I know like this is good maybe, I don't know. 1-1 ठीक है। कॉन्टेस्ट में मेरा जो टाइम था वो इससे थोड़ा सा ही 120 I guess. 30 minutes. Third question solve kara contest mein. First question 30 minutes. Third question was very easy, like very easy. For 6 minutes. What question should have taken 6 minutes में? बंदे यार थे पाइथन में नहीं हो रहा, वो देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। और रही बात फोर्थ क्वेश्चन की, if you want to see that number of pair satisfying equality. Yeah, this is actually I'll explain in another video. Let me give you just a little question explain कर देता हूँ in my style so that you can think about this problem really well. So you are given a 0 indexed integer arrays, not arrays, like 2 arrays, just like the expression. Nums1 and nums2, each of size n. Now the good thing is both array have same size, and an integer difference you have been given. Okay, so one integer is also. So what you have to return, you have to find the number of pairs. Okay, number of pairs, good. X I comma j, these are index pair, such that like some condition hold true. First of all, I and j should belong to 0 to n minus 1, so that yeah, it's indexed. That's why it is like that. And nums of ij, or nums there, sorry, nums1. Nums1 of I, there is a relation that should satisfy true. The relation is nums1 of I minus nums1 of j should be lesser than or equal to nums2 of I minus nums2 of j plus difference, ठीक है। And I and j ऐसा है कि I छोटा j बड़ा है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है I and j पे और कुछ कंडीशन है nums1 nums2 पे। So this is the array like and you have to return the number of pairs that satisfy the condition. So just see all the pairs of I and j that satisfy some condition. Some condition is like obviously I and j belongs to 0 dimension. That's not really something, but the only condition it should satisfy is that nums1 I minus nums1 j should be less than equal to nums2 I minus nums2 j plus. If you see in the example, nums1 is 3 to 5 and 2 to 1, diff is equal to 1. So pick any two index in nums1. Let's say I pick 3 comma 5. Do the difference, and this is actually negative difference. 3 minus 5 is minus 2. Do the difference of nums2. 2 minus 1 is 1, which is positive. Plus it's again positive, which is 2. So minus 2 is obviously less than equal to 2. So yeah, this is a good pair. So you can see this good pair is over here. 0 comma 2 plus minus 2 is less than 2. Similarly 3 2 if we go 0 1 is forming good pair, 1 2 is forming good pair. ये तीन ही तो पेयर होते हैं यार, इसमें सारी गुड पेयर है, ठीक है। एंड यार दैट्स व्हाट इट इज। इसमें एक भी गुड पेयर नहीं है बिकॉज अगर यही इसमें पेयर तो एक ही है, बल्कि इसमें 3 minus 1 2 होता है, ये 0 है वहीं से, और minus 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इज नॉट लेस देन minus 1, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। रूट वे अगेन मैं तुम्हें दे देता हूँ, बट अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें रूट वे इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द गुड वे। So either you do or not, it doesn't matter. But this thing is like you have to return the number of indexes, etc. So auto से आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, pretty sure. But this is the way to actually write a good code. But this is the way to have all the possible pairs. But again,
as I told you, this is not gonna help because it's like two nested for loops and it's for 5 and log n square cannot do this. I think as you return C over here you will do something. You will do if some condition like n1 of I minus n2 of I should be less than or equal to let's say this is n1 where this n2 of I minus n2 of j plus b. You can frame this condition in some good condition like n1 और n2 एक एक साइड कर दो, n1 of I minus n2 of I is equal to n1 of j minus n2 of j. So if you do something like this, if let's say this is a n3 array, ठीक है, n3 of I is less than n3 of I is 0 I होना चाहिए, ठीक है. तो n3 of I is n3 of I क्या है, n3 of I n 5 n plus 5 0 of 5 n3 of 5 3 of 5 for 5 sorry. So this is n1 of I minus n2 of I. So that's what n3 is. n3 is equal to n1 minus n2. So if you do this, then it should be n3 of j plus b. But still, even after doing this, it doesn't remove these two for you because these I and j are variable, n3 is constant, but I and j are variable, right? So then it would become much more simpler. Like if you have n3 or something like n3 as some vector like this, then you can just go to like this one you need. Like you cannot, I think, just skip this path. There goes the ego. So this is the I and j, and then condition would be just on n3 only, ठीक है. If n3 of I j is equal to that n3 of I minus n3 of j is doing this, ठीक है. n3 of I is less than or equal to n3 of j. तो ये चीज़ तुम चेक कर सकते हो by using ordered set. Something is a good data structure that exists in C++. So उसके लिए कुछ external libraries that play that is complex, but you can find it on internet. And yeah, that's a pretty decent question, like decent concept. It's a pretty decent concept of having ordered set, which is something like set having indexing also, like care about index set which care about indexing. That kind of stuff is called ordered. So actually in C++. And ये तरीका काम नहीं करेगा. n3 of I is greater than n3 of j. So that was it. Try this once. Chalo, okay, bye, good night.